Okay, yeah. So we can start now. Hello, everyone. Welcome back to another one of our weekly career classes. My name is Anushri Rastogi, and I will be your host for today's live session. Thank you all for joining in, and we are thrilled to have you all here today. So for today's weekly career class, we will be talking about the strategies and you should know in order to achieve 90 plus marks in score in 95 plus marks in board exams, like as you can see on the screen. And joining us today for this session is Mr. Raunak Singh, the topper. And when I say the topper, literally he is a topper. He has achieved 96% marks in board exams, and not only this, he has achieved academic success along with personal growth. He's a final year student of bachelor's in management studies at University of Delhi. He's also an author and translator and social entrepreneur. He has been a talker at Akashvani Radio also. He has performed at Ashtak and Ministry of Culture, and he has been a delegate at the prestigious Harvard University conference. So, welcome and thank you, Ronak, for joining us today. Thank you so much. That was a rather long and detailed introduction. Uh, First of all, thank you, iDreamCareer and Anushree, for having me here. I hope this is going to be a fun session where I would engage with students and giving them insights about my board examination journey and sharing tricks, techniques, and tactics with students. Yeah, thank you. So before we start, if you have any questions, please don't hesitate to use the live chat feature to ask or share your thoughts. We will be taking up your questions towards the end of the live, and yeah. So let's go. Ronak, first of all, like I would like to tell you. So there are so many questions when we run हम लोगों को जब topic finalize किया था, and then हमने एक poll इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे रन किया था। उसके बाद हम लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। सो दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आई विल बी आस्किंग यू। So you are like you have scored a like 96%, which is like somewhere around for me as a student. When I was a student, it was an unachievable number. Like I have not thought of scoring this much marks. My aim was like 80% आ जाए बहुत है। तो 96% मार्क्स लेके आना आने के लिए भी मतलब लाइक काफ़ी सारे स्ट्रगल्स होते हैं एंड काफ़ी सारे लाइक पुश डाउन भी होता है, काफ़ी बार लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है बिकॉज यू गेट बोर्ड वाइल स्टडिंग। सो माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज लाइक हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे गोल सेट कर लेते हैं और एंड में स्ट्रगल करते हैं उनको अचीव करने के लिए। लाइक बोर्ड एग्जाम्स में यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं 95% मार्क्स लेके आएंगे एंड ऑल्सो पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आता है कि 95% मार्क्स आ गए देन यू विल गेट अ बाइक, यू विल गेट अ मोबाइल इफ यू स्कोर 95% मार्क्स और 96% मार्क्स, तो ऐसा प्रेशर भी आ जाता है। सो व्हाट टेक्निक्स और माइंडसेट्स did you use to achieve that a score above 95% was achievable to you? Like I would like to know what were the techniques you used during that time. First of all, it was a lot about game of confidence. First, believing that you would be able to score is the first thing. Now, for somebody like me who had been scoring good in 9, 10th, 11, 12, it was little easier for me because I was scoring good in pre-board examination, final examination, semester examination, and eventually I just thought about carrying the momentum forward. But for many students, this is not the case. So what happens is that, say, for example, if you're aiming at 95%, the most important thing is to break down the plan. Like if you want to score 95 in class 10, for example, there will be strength and weaknesses, right? You need to identify them. Then you say, for example, if you're very good in mathematics, you know that you can score around 96, 97 there. But then you're weak in Hindi or SST. Now, and when you're weak in Hindi and SST, there is this formative assessment that has 100 marks. All right. So this micro planning goes into it. So once you're able to plan it very precisely, you have this clarity that these are the weaknesses and strength. You are able to break down your strategy. Ultimately, you'll have the confidence and you'll be able to make more better plans and have this confidence infused in you that you would be able to score well. Well, and we'll discuss the details and techniques in the later part of the discussion.
Yeah. Moving on to the next question, also which was like this around ki, what strategies and a timetable do you think a student should follow? Like, what was your overall strategy and daily routine? आप daily आपका daily क्या बोल सकते हैं एक schedule क्या रहता था while you were preparing for your board exams? So, how much time did you dedicate it to your study? This was the second question which I wanted to ask and which our viewers wanted to ask. Yeah. So in terms of schedule, it was like taking small steps. Now, my I relied on very basic methods of learning. I went to school. I listened to teachers very carefully, came back, revised what was taught, and after every chapter in NCRT books that we follow, we have chapter and exercises. I used to solve them. Then we had solved examples. So I used to solve them. Other than that, in our school, I studied at St. Paul's High School, Hajipur. So there we had this tradition of having big test after every chapter was completed. We used to have one big test. Now I used to very sincerely and religiously prepare for this big test. Now at a micro level, after each chapter, I was doing revision. I was following the teacher. Then for test, I was preparing. So, I was step by step, brick by brick, I was laying the foundation of the preparation. So ultimately, the key was consistency. To listen to teachers and then execute, do not carry any backlog, and then be very consistent in terms of preparation. तो मेरा ख्याल है कि इसने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं कंसिस्टेंट रहा, मैंने कभी भी बैकलॉग बहुत ज़्यादा नहीं आने दिया। और चूंकि बोर्ड एग्जाम्स का बहुत ऐसा सिलेबस इतना वास्ट नहीं है इन कंपैरिजन टू आईआईटी जेई की बात कर लें या फिर नीट की बात कर लें, तो उनके मुकाबले इतना एडवांस सिलेबस नहीं है, जिसकी वजह से आप अगर थोड़े दिनों के लिए से फेस्टिविटीज हैं या फिर मैरिजेज हैं तो कोप करना डिफिकल्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं। तो राइट टाइम पे कंसिस्टेंटली मूव करना वाज माय स्ट्रेटजी, एंड दैट इज हाउ आई थिंक इट वर्क फॉर मी, एंड आई एम वेरी होपफुल इट विल वर्क फॉर अदर्स एज वेल। That's great. Because like मेरे टाइम पे क्या होता था कि NCRT was the key. So we don't. I did my class 10th, I guess in 2008, and there was no side books available that time. So we used to rely on NCRT. We used to follow the teachers. Whatever they are saying, they are right. They are saying for our goodness. But अभी क्या हो गया ना, like the pattern has been changed. So students like tend to read multiple, they're also following YouTube online chapters. So there are so many channels right now. So वो वाला चीज भी आ गई है. So what do you think, like do you also believe that going like multiple platforms is a benefit, or maybe you should follow only NCRT, या फिर multiple platforms जैसे YouTube हो गया, Google हो गया, यहाँ पे जाना चाहिए बच्चों को? आई थिंक इसमें ये कर सकते हैं कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं। And I'd quote Bruce Lee here. I did martial arts back in my high school days. And my martial art teacher used to say this, that वो Bruce Lee को quote करते हुए कहते थे कि I'm not afraid of a person who knows 10,000 kicks, but I'm afraid of a person who has practiced one kick 10,000 times. So this is the crux of this preparation कि NCRTs have enough content जिससे आप कम से कम बोर्ड एग्जाम्स में तो आपको कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के एतबार से अगर हम देखें तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सिर्फ एनसीईआरटीज पे रिलाई करें, इसके बाद पीवाई क्यूज आ जाते हैं। तो आप एक बार आपने बोर्ड एग्जामिनेशन एक बार, क्योंकि सिलेबस समझना भी बहुत जरूरी है, अब तो बेसिक हो गया है, एडवांस मैथमेटिक्स हो गया है, इसके साथ ही साथ अब थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं कि कुछ स्लैश कर दिए, कोविड पेंडेमिक के टाइम हमने देखा कुछ चैप्टर स्लैश कर दिए गए। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी एबल टू नो योर सिलेबस। तो एक तो अगर आपको सिलेबस पता है, दूसरी की एनसीईआरटी को आप बार बार पढ़ रहे हैं, अगेन सॉल्व एग्जांपल्स कर रहे हैं, अनसॉल्व एग्जांपल्स कर रहे हैं, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि समय बच गया है 5-7 साल, तो फिर आप कोई क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हैं। एंड इन सर्टन एरियाज जहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो वहां पर तो वी आर ब्लेस्ड विद बीइंग बोर्न इन दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। तो इतने सारे इतने खूबसूरत यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने खूबसूरत बेहतरीन ट्यूटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, तो आप स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए आप उनका सहारा ले सकते
Yeah, right. Like absolutely right. I also believe that there are some reliable sources, resources available on YouTube as well. So yeah, one can follow that. So moving on to the third question, I would like to know how did you balance while preparing for your board exams and also maintaining your mental health, spending time with friends and families and having some fun. So like most of the time ऐसा होता है ना कि we tend to cut down our relatives, our family, our friends. We keep on like keeping ourselves busy. बुक्स लेके बस बैठे हुए हैं तो सिर्फ बुक्स लेके बैठे हुए हैं, कहीं जाना नहीं है, कहीं घूमना नहीं है. सो वी डू दैट, आई यूज टू डू दैट. मतलब मेरे यहाँ तो ये वाला चीज था कि आई डोंट लेट माई पेरेंट्स वॉच टीवी ऑल्सो, कि नहीं मेरे एग्जाम से यू कैंट वॉच टीवी. So how did you balance that? But eventually after some years I realized that it was not required. मतलब क्योंकि mental health is the priority. आप books में कितना lost हो सकते हो, like 24 into 7 you can't keep yourself engaged in the books. So how did you balance that? Very pragmatic question, but I was very blessed with the right friend circle. So I had with me my friends Sushant, Akshay, Deepak. So what we used to do was that I stay in Hajipur. So right beside our house, there is this river called Gandak River. So I used to walk around them with my friends and have chit chatting. So that used to, burst my stress, and that helped me a lot throughout this preparation. Other than that, I'm a very big cricket fan. तो मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा देखा करता था और क्रिकेट खेलता भी बहुत ज्यादा था, तो मैंने ऐसा कर लिया था कि मैं अपने आप को रिवॉर्ड करता था कि इफ आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग, मैं सैटरडे को या फिर संडे को इतने घंटे क्रिकेट खेल. तो आई थिंक स्पोर्ट्स सबको टेकअप इसीलिए करना चाहिए. अगर आप क्रिकेट जैसा टीम गेम नहीं कर सकते तो आप इंडिविजुअल गेम बैडमिंटन ले सकते हैं. अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप रनिंग कर सकते हैं. रनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं तो शायद मेडिटेशन कर सकते हैं. ये न सिर्फ आपके स्लीप साइकिल वगैरह को बेटर करते हैं, बल्कि स्ट्रेस भी लाइफ से बहुत हद तक कम करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरे लिए कि मैं खेलता. अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ क्रिकेट फील्ड, का पूरा ध्यान सिर्फ उस गेंद पे होता है जो आपकी तरफ आ रही होती है एक रफ्तार की तरफ, एक रफ्तार से. अगर आप फील्डिंग कर रहे होते तो सिर्फ आप उस बॉल को देख रहे होते हैं. तो एक वक्त के लिए आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, बट आप जब ग्राउंड पे होते हैं तो यू आर कट ऑफ ऑफ एवरीथिंग. तो मेरा ख्याल है वो एक जरूरी बात थी कि आप आउटडोर स्पोर्ट्स से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ जो इश्यूज आ रहे हैं उनसे थोड़ा बच सकते हैं. दूसरी बात यह है कि दोस्तों पे बहुत भरोसा जरूरी है. अगर इफ यू हैव द राइट सर्कल ऑफ, क्या होगा कि अगर आप जैसे कई लोग 95, आई नो कि ये 90 प्लस की हम बात कर रहे हैं, कई लोग हैं जो स्टेट टॉपर भी बनना चाहते होंगे, 99% भी लाना चाहते हैं. कई लोग के लिए 95 लाना ही डिफिकल्ट है. तो हर कोई जो टारगेट अपने लिए सेट कर रहा है, दैट इज ऑलरेडी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम. राइट, समबडी इज एट 80 एंड ही इज एमिंग 95. नाउ इन दिस प्रोसेस देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स. तो हर डाउन के वक्त आप अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकते. तो व्हाट डू यू हैव विद यू, यू हैव विद यू योर फ्रेंड्स. तो कई बार हम अपने इस फ्रेंड सर्कल को, जो हमारा सोशल कैपिटल है, जो हमारे लोग हैं हमारे आसपास, खासकर फ्रेंड्स, उनसे कट ऑफ करने की सलाह दी जाती है बोर्ड एग्जाम से, ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के वक्त. मैं इस बात में थोड़ा यकीन कम रखता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट ये आपके दोस्त होंगे जो आपको बताएंगे कि ठीक है मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ. सो इट्स नॉट नथिंग डिफरेंट, और ये सबके साथ होता है. या फिर डोंट वरी, दिस इज अ रफ पैच, थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम. सो ये रियलाइजेशन देने के लिए आपके पास आपके दोस्त होने बहुत जरूरी है. तो मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास सही दोस्त हैं, आप आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे हैं, और आप फैमिली में अगर अच्छा एम्बियंस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आने चाहिए. Yeah, thank you. And this reminded me like one of the podcasts I was watching this morning only. So it was a TEDx by Anubhav Singh Basi. Many of our viewers must know. So he was also mentioning this thing that those जरूर होने चाहिए आपके पास. ट्रू. It is very much required because they can understand each and everything, like what is happening around, because they are also going through with that phase. सो या इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपके पास फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स होना भी बहुत ज़रूरी है. एंड बुरे फ्रेंड्स भी होना ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि वो एक आपको लर्निंग देके जाते हैं, आई एग्री. एब्सोल्युटली.
Yeah. Absolutely. So moving on to the next question, what was the most challenging part while you were trying to achieve this top score, and how did you motivate yourself during that tough phase, during that tough days? ऐसा होता है ना कई बार कि हम पढ़ते रहते हैं and we feel like नहीं अब नहीं हो रहा है. Like let's just close this book. I don't want to study now. So how did you manage that phase, and what was how did you keep yourself motivated during that time? सर वो भी एज आई सेड कि कंसिस्टेंसी में पहले भी मैंने कॉन्वर्सेशन में कहा कि कंसिस्टेंसी वाज द की. नाउ देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद कंसिस्टेंसी. द फर्स्ट थिंग इज इट इज एब्सोल्युटली बोरिंग. So when you're first time when you're covering the chapters and the topics are relatively new, you are interested in the topics, you're interested in the subject. But once you are done with it, and then you do another round of revision and you're done with it again, now it is there that you might start saying कि अब और नहीं, दो बार पढ़ लिया, more than enough है. But then if you have to excel तो फिर आपको और भी पढ़ना पड़ेगा ताकि रिटेनिंग अच्छी हो, क्योंकि जितने ज्यादा साइकिल ऑफ रिविजन्स होंगे रिटेंशन उतना ज्यादा अच्छा होगा. जनरली 3 to 4 साइकिल ऑफ रिविजन्स के बाद रिटेंशन शायद सबसे बेस्ट होता है. तो मेरे लिए ये था कि अपने आप को मोटिवेट करके रखना कि वही चीज बार बार पढ़ना, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सोर्सेस बहुत कम रखता था और उनको बार बार गो थ्रू करता था. तो ये बहुत मुश्किल था, बट बैक देन वी हैड लिमिटेड एक्सेस टू इंस्टाग्राम, फेसबुक. तो एक वो भी बात थी. तो आई यूज टू ट्रीट माई सेल्फ कि ठीक है, अगर मैं ये कंप्लीट कर ले रहा हूँ, ये रिविजन कर पा रहा हूँ, तो मैं फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपने आप को थोड़ा सा समय दे दूंगा. एंड आई यूज टू राइट एक्सटेंसिवली ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम. तो मेरी राइटिंग का भी वो था. तो मैं यहाँ पर जो वो अपने आप को मोटिवेट करता रहता था कि ये वाला काम कर लेते हैं फिर रिवॉर्ड. तो ये आई थिंक इन लॉन्गर टर्म ऑल्सो हेल्प मी. आगे भी जो प्रेपरेशन हुआ या अभी भी जो चल रहा है उसमें भी इट इज हेल्पिंग मी अलॉट कि एक अपने टारगेट सेट कर लेना और टारगेट अचीव होने के बाद अपने आप को ट्रीट देना. आई थिंक दैट्स वन. Yeah, like And so also, yeah, I just like to add one more thing. yeah. Uh, no matter which examination it is, there is a bigger picture associated with it. See, if you are preparing for your 12th board examination, back then there did not used to be CUET, so the admission was through merit. Now for 12th, if you score well in standard 12, that was the gateway to the best universities in the country, right? So it was the bigger picture sometimes that kept me motivated कि ठीक है इसलिए पढ़ रहे हैं, या फिर this will lead to a better lifestyle. It will give me an opportunity to empower people. So dreams can be different, but then this is something that will help you achieve your dreams. So the bigger picture kept me motivating, and I think that is one thing that we all can. Yeah, thank you, Ronak. It was like quite interesting to get the answer. So moving on to the next question, like, are there any hidden tips and tricks you want to share on our channel, like that you feel that you have not talked so far right now, and you want to discuss here on our channel exclusively at iDreamCareer? For those who are watching us, do you want to share any like special tips that you followed hidden that were hidden right till now? In terms of syllabus and strategy, I was fairly simple and traditional. It was only about relying as much as possible on the NCRTs, following questions, doing rounds of revision, solving PYQs, and then going with a question bank. So, because I had a lot of time left, so I used to rely on one question bank for each subject. Now, that is moreover what we do. So, but every year, what happens is, why do I used to do question bank is that in mathematics or in any subject in physics, chemistry, or in mathematics class 10 sciences, every year there are a few surprise questions here and there. Right? There are two, three questions that decide whether you will be in 90s June or 95 June. राइट. सो ऑल दैट क्वेश्चन बैंक वगैरह पे मैं थोड़ा रिलाई करता था बस इसीलिए ताकि आई कैन गेट एन एज ऑन दोज क्वेश्चंस. तो ये एक चीज थी जो मैंने किया, मैंने फॉलो करी. इसके अलावा आई थिंक जो एग्जाम के हॉल के अंदर की जो कुछ बातें आई थिंक वी कैन डिस्कस इट इन द लेटर पार्ट ऑफ द डिस्कशन. बाकी चीजें मैंने बहुत प्लेन एंड सिंपल रखी और लाइक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेपरेशन रहा. तो आई डोंट थिंक कि आई हैव एनीथिंग लाइक दैट कि मैं शेयर Okay, कर there is सकूं. no hidden tips. You are इट्स saying that. Okay, हार्ड I वर्क believe in एंड you. रिपीट कंसिस्टेंसी.
I believe in that. Yeah. Okay, so moving on to the next question. So there, Ronak, there are certain subjects like I don't like. I when I was a kid, I didn't like social science. ठीक है, मेरे को नहीं पसंद था social science, and I was not good at civics, history, and geography. I never liked that subject. And when I came in, like I was in class 12th, there was a subject which I don't like was maths. ठीक है, आई हैड अ Okay. fear of maths. So there are certain subjects जो हमें नहीं पसंद होते हैं, and they are like our weakness. So like how did you handle subjects that were not your natural strengths, and what advice do you have for improving the weaker areas? Right. So after 10th, things are relatively easier because you get to choose between physics, chemistry, mathematics, or you want to go with commerce stream, or you want to go with arts and humanities. So because choice is involved, I believe the later part was easier for me. But I faced some problems with standard 10th board. So वहाँ पे क्या होता था कि हिंदी में मुझे मात्राओं की बड़ी दिक्कत होती थी। कहाँ पे छोटी की मात्रा ह्रस्व की दीर्घ की उसकी बड़ी परेशानी होती थी मुझे। तो सबसे पहली बात तो ये है ना कि इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज माय वीक एरिया, यू आर हाफ वे देयर। बिकॉज अगर प्रॉब्लम पता है तो सिर्फ उस पर मेहनत करनी। तो प्रेपरेशन में जिनको भी अपनी कमियां दिख रही है दे शुड बी ग्लैड कि चलो कम से कम मुझे ये पता है कि दीज आर माय वीकनेसेस, दीज आर द प्लेसेस दैट आई हैव टू वर्क ऑन। क्योंकि कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि उनकी वीकनेसेस क्या है। Hmm. तो एक तो है कि मैं जब मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी, आई हैड दिस वेरी फाइन टीचर श्री पांडे महोदय। तो मैं उनके पास जाता था, मैं बताता था कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बताया कि कहाँ कंजंक्शन है, कहाँ कारक है, और थॉरली एक्स्ट्रा टाइम एलोकेट करके उनके साथ आई वाज एबल टू। और कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं। तो वन थिंग इज टू बी एबल टू टॉक टू सीनियर्स एंड टीचर्स वेरी बिकॉज दे आर देयर टू हेल्प यू आउट। तो आई यूज टू हैव अ कॉन्वर्सेशन वेरी ओपनली विद माई टीचर्स कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। And because these teachers have experience of 15, 20, 25 years, and they have seen many students like you facing similar problems, so in most cases they do offer a good solution. बाकी इन जेनरिक केसेस अगर कोई वीक एरिया आइडेंटिफाई हो रहा है, तो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन allocate a little extra time for it. Then again, say there is a breakdown. Say for example, अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो क्या पूरी ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम है, या ऑप्टिक्स के किसी हिस्से में प्रॉब्लम है, पूरे इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है, मैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम। तो पहले वो आइडेंटिफाई करना, फिर उस पर वर्क करना जरूरी है। देन अगेन एक बात आती है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। अब यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, दे आर वंडरफुल टीचर्स जो लाइक हो सकता है आपके स्कूल के चार बहुत अच्छे टीचर हो, और वैसे कितनी सारी स्कूल्स हैं पूरे पूरे हिंदुस्तान में, और उसके इतने अच्छे अच्छे टीचर्स इतने, तो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम उसको थोड़ा उस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। सीकिंग हेल्प, तो ऑब्वियसली अगर टीचर से हेल्प नहीं हो पा रहा है तो आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, आपके सीनियर कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स कर सकते हैं जो कि एक्सेल कर रहे हैं। इस बीच मुझे लगता है मैंने भी अपने फ्रेंड्स की बहुत हेल्प करी थी बोर्ड एग्जाम्स के वक्त। वो जब कोई प्रॉब्लम होता था मेरे घर आ जाते थे। आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प मी इन माई प्रेपरेशन। तो जो एक सीक्रेट शायद मैं दे सकता था अपनी तरफ से, जो अब मुझे याद आ रहा है, वो ये था कि अगर आपके पास कोई दोस्त है और अगर आप उसके डाउट सॉल्व कर पा रहे हो तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपने थ्योरम्स उसको प्रूफ करके दे दिए हैं, जो सब्जेक्टिव चीजें हैं वो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, उस टर्मिनोलॉजी के साथ एक्सप्लेन कर पा रहे हो जिस टर्मिनोलॉजी के साथ वो किताबों में एक्सप्लेन है, तो मेरा ख्याल है कि उससे काम बन जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर ये आइडेंटिफाई हो गया है कि प्रॉब्लम है, तो हम उसको फिर तो हेल्प लेते हैं, उस पर काम करते हैं, उसके बाद उसको रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए कि ठीक है अब ये टॉपिक मेरा बेटर हुआ है या नहीं है। और अभी के समय में जैसे बहुत सारी चीजें, प्लाकार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, तो जो स्टडी एड जो हम ले सकते हैं चीजों को आसान बनाने के लिए, उन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टू कट शॉर्ट कि जो है थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, हेल्प लेना है, और पीरियोडिकली रिव्यू करना है कि हम उसमें इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं। Okay, Ronak, so I'm really sorry to cut down. So there are so many questions coming out, and I'm also getting backlash because I said I don't like social science. So everyone, we will be answering your questions shortly, like in the end of the session. Once we are done with the questions, uh, which we got from through our poll. And I'm really sorry for all the social science lovers, but yes, that's the truth. I never liked that subject, and this is how I am. Okay, so moving on to the question.
walk us through your like how you achieve approach to your final days leading up the exam, like last moment preparation tips and anything a high scoring student should do just before the test day. Like is there any tips you want to share कि last minute में क्या क्या करना चाहिए, because like अभी जैसे एग्जाम चल रहे हैं, क्लास टेंथ हम्म, के भी चल रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ के भी चल रहे हैं, एंड और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, आने वाले हैं, नीट आने वाला है, जेडबल का सेशन 2 आने वाला है। सो व्हाट लाइक और ये सारे एग्जाम्स एक साथ ही होंगे, लाइक जैसे ट्वेल्थ का बोर्ड खत्म होगा उसके बाद नीट एग्जाम आ जाएगा मई में, एंड देन उसके बाद सेशन 2 आ जाएगा जेडबल का। सो व्हाट लाइक how to manage and how to balance out these like last minute tips? Oh, yeah. So I'll first answer specifically to the board examination, which is final days before board examination. The simplest strategy that we follow in other competitive exam is that we create a formula book. Now, so in like say, can you just give me a second? Sure. Yeah, I'm really sorry for the That's short completely all right, disturbance. no Yeah, worries. I was just getting a little distracted. Sure. Yeah, so it was about creating a formula book. So, be it mathematics, physics, chemistry, you can create a formula book of chemical reactions or equations. So that is one thing that you can do because it helps in revising last minute. The second is कि once the examination is closed, do not take up any other source. Like आप बहुत ज़्यादा किसी दूसरे सोर्स पे रिलाई ना करें जो आपने पढ़ रखा है, कोशिश करें कि उसी को रिवाइज करें। और दूसरी चीज़ है कि फोकस ऑन योर हेल्थ, अपने आप को हाइड्रेट रखें, ईट हेल्दी फूड, और हर बार नो मैटर हाउ गुड स्टूडेंट यू आर देयर विल बी पैनिक। जो एक पहला लेवल ऑफ स्टूडेंट है 60 70s का, उनको ये डर है सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा, जो उसके ऊपर है उनको रिवीजन की प्रॉब्लम पड़ी हुई है, जो उनके ऊपर है उनको थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन की पड़ी हुई है। बट एट द एंड क्या होता है कि जो आपने प्रोसेस को अगर ठीक से फॉलो किया है, डे वन से अगर आप एक्टिव रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत चीजें पहले से फीड है। तो कई बार उस पर रिलाई करना चाहिए, और हो सकता है 3 राउंड आपने रिवीजन कर लिए हैं 3 बार, और फिर आप चौथी बार करना चाहते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए इस बीच में कि आप बहुत ज्यादा पैनिक ना करें। थोड़ा बहुत लेट डिलेज होता है, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा ना रहे, और अच्छी नींद लें, मतलब मे बी 8 आवर्स ऑफ स्लीप तो कम से कम ले नहीं चाहिए, तो अच्छी नींद लें। All right. So yeah, moving on to the next question. I think you have already covered that, but still, I want to know this thing. What advice can you share with with our current students who want to achieve 90% or maybe 95% marks in their upcoming exams? So because of some family pressure रहता है सबके ऊपर कि नहीं इतने तो आने ही चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरे टाइम पे तो था, अगर मोबाइल चाहिए तो 80% मार्क्स आएँगे तभी मोबाइल मिलेगा। So there are like there are set expectations and there are some uh, like pressure coming from family also. So friends also, sometimes from friends also we get like expectations that तुम्हारे तो 95% आ ही जाएँगे, अरे तुम तो टॉपर हो। So like what advice you can share with our current students? It is to be to stay grounded, to consistently work on it. Result के बारे में बहुत ज्यादा सोचना मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं है। I would like to speak on this in the later stages कि रिजल्ट जो है वो आउटकम है आपके एफर्ट्स का, क्यूमुलेटिव आउटकम है। तो अगर आपके एफर्ट्स बहुत सही तरफ जा रहे हैं, अगर आप बहुत सही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो आउटकम पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए। वी आर वेरी यंग एज, लाइक आप 15 ईयर्स के एज में एक बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, 17 ईयर की एज में दूसरा बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आप 18, आपकी वोटर आईडी आपकी बनी नहीं होती है, आप ड्राइविंग के लिए एलिजिबल नहीं होते, इतने कम उम्र में इतना ज्यादा स्ट्रेस लेना मेरा ख्याल नहीं है कि ठीक है। तो बेसिक चीजें कि अपने प्रिपरेशन पे, और जो जॉय ऑफ लर्निंग है ना, कि आप नई चीजें सीख रहे हैं, ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो से बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि दिस जॉय ऑफ लर्निंग शुड टेक द फ्रंट सीट, और इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए rather देन थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट।
So Yeah. this is one way of looking at it. I agree. Even I believe not everyone is a good scorer. Yeah, Right? People coming from industry, like if I say someone who is a actor or who is an actress, they're also not good at studies, but they are like they have made their good name. So yeah, it is all right, and it is fine not to not score beyond your capacity. It is all right. I think you should like take a deep breath and think about this, that you have learned something. It's true. better to learn something. Yeah, so moving on to the next question. So if you could study again, like अगर अभी आपको chance मिला जाए वापस से पढ़ने का, I'm sure you will not love to do that. But if you still get a chance to study again or give your class 10th or class 12th, so is there any major change in study technique or study plan you would like to take, or you think if you could have taken that, it could have worked out well? All right. So is this the last question, or we are going ahead with a few We questions more? have some questions. We have some questions on our chat panel. So we will be Okay. talking about that Oh, questions about also. that. All right. So before that, I have not covered the mock test, which is a very important element. So I'll come to that and then I'll answer this question if you permit. Sure. Yeah. So, I did not discuss about the mock test, but it is a very important component of your preparation of your examination. So, there are two, three things that we need to keep in mind while we are analyzing the mocks. The first is that do try to take this mock at the time when you have the actual examination. अगर आपका एग्जामिनेशन 10 बजे से 1 बजे के बीच में है तो कोशिश करिए कि उसी टाइम में आप मॉक एग्जामिनेशन को लिखें. दूसरी बात कि सम पीपल हैव एयर कंडीशन रूम्स, राइट, बट एग्जामिनेशन सेंटर पे हो सकता है कि एयर कंडीशन रूम्स ना मिले. वहाँ का जो एम्बियंस है वो थोड़ा सा अलग होगा. तो आप अपना एयर कंडीशन ऑफ करके आप पंखे की हवा में अगर आप एग्जाम दें तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है. तीसरा ये है ना कि जो रीडिंग टाइम मिलता है उसकी आदत आप मॉक टेस्ट में डालें कि हर मॉक टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन रीडिंग टाइम भी आपको मिलता है अलग से. तो आप उस क्वेश्चन रीडिंग टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें मॉक में भी ताकि ये एक हैबिट बने जो बाद में जाके एग्जाम में भी आए. कोशिश करें कि 5 से 7 मिनट पहले खत्म करें. और 5 से 7 मिनट पहले जो एग्जामिनेशन है उससे पहले टाइम टाइम थोड़ा सा कम रखें. क्योंकि क्या होता है कि रियल एग्जामिनेशन में कई बार हो सकता है कि एक्सटर्नल्स आ जाते हैं चेक करने के लिए, न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो मॉक्स का बहुत वो रखना है. फिर एग्जामिनेशन के दिन आप थोड़ा ये बात का ध्यान रखें कि आप अपने साथ अपनी वाटर बॉटल रखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और इजियर क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लें. इसका फायदा ये होता है कि डाउन द लाइन जब आप लिखने के फ्लो में आ जाते हैं तो कई चीजें जो आपको शुरू में मुश्किल लग रही होती हैं दैट डजंट लुक वेरी डिफिकल्ट. उसके बाद नीट हैंड राइटिंग एज वी ऑल नो, प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है. आप डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर सकते हैं. अगर आपको कोई ओवर राइटिंग करनी है, कटिंग करनी है, तो वो बहुत क्लियर एंड प्रेसाइज हो और इम्पोर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करें. तो और फिर जैसे कि आपने भी कहा कि इफ इफ एवर इन माय लाइफ आई हैव दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग बैक एंड डूइंग समथिंग डिफरेंटली, आई एम रिमाइंडेड ऑफ मिर्जा गालिब एंड हिज वन शेर की हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है. हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है. वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो यूं हो. मतलब दिस लेमेंट ऑफ गोइंग बैक every time and questioning if it would have happened like this, it would have been better. तो एक चीज जो मैं अपने आप को समझा पाता, अगर मैं सिखा पाता, तो ये था कि दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन. डिस्पाइट स्कोरिंग वेल इन बोथ दीज एग्जामिनेशन आई डिड नॉट एंजॉय इट. आई डिड नॉट एंजॉय द रिजल्ट. आई एंजॉयड द प्रोसेस बट नॉट द रिजल्ट. तो मुझे अपने आप को शायद ये बात मैं अपने आप को समझाऊंगा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है. सबके साथ होता है ऐसा कि ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, इसके बाद भी जिंदगी खत्म नहीं हो रही है. सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तहान और भी हैं. मैं अपने आप को बस ये बताता कि आप सेलिब्रेट करिए क्योंकि आपने इस प्रोसेस को अच्छे से निभाया है, आपने ईमानदारी से मेहनत की है एंड यू हैव बीन ट्रू टू योरसेल्फ इन दिस एंटायर प्रेपरेशन. तो सिर्फ एक एडवाइस मैं अपने आप को ये वापस जाके देता. बाकी आई थिंक आई हैव नो रिग्रेट्स एंड आई डिड द बेस्ट दैट आई कुड हैव डन in my capacity. Okay, that's great. Really wonderful. So yeah, Ronak, we have some
questions, and actually we have so many questions. First of all, best of achieves archives want to know how to manage stress and time scheduling for other activities as well, like playing or debating, etc. या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे आसान तरीका तो ये है कि यू हैव अ स्कूल पीरियड, देन यू गो टू कोचिंग. उसके बीच में अगर कोई स्लॉट है तो आई वुड रिकमेंड 45 to 1 hour ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो उसके बीच में आप कहीं एडजस्ट कर ही लीजिए. उसके बाद फिर आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, और सफिशिएंट स्लीप का जो है वो आपको ध्यान रखना है. इसके बाद वीकेंड्स में ना आप सैटरडे संडे, अगर 5 days अ वीक स्कूल चलता है, तो एक संडे के दिन आप अगर कोशिश करें तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जो करना चाहते हैं, डिबेट्स वगैरह करना चाहते हैं, तो वो करें. ध्यान रखिए कि आपको मैनेज करना है, किसी एक चीज को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि डिबेट आपको लाइफ में वो सारी बहुत चीजें दे सकती है जो शायद आपको अकेडमिया की किताबें नहीं दे सकती. तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल कि आप दोनों में एक बैलेंस बना के चलें. शाम का वक्त खेलने को जरूर दें, या फिर अगर कभी खेलने से उतना मन नहीं कर रहा तो आप उसको डिबेट की प्रेपरेशन वगैरह वगैरह में कर सकते हैं. बट वो टाइम मैनेजमेंट तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, तो वो आप बेहतर समझ सकते हैं. बट इन शॉर्ट, ये जो भी आपका पैशन वाला एलिमेंट है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं. Okay. So yeah, moving to the next question. Is it mandatory to leave all other stuffs of extracurricular activities in these 2-3 months? अ, आखिर के कुछ महीनों में, जब प्रेपरेशन अपने पीक पे होती है, तो आप थोड़ी बहुत कटौती कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसी, जैसे आप मार्शल आर्ट्स करते हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी चाहिए होता है, या फिर आप अगर थोड़े प्रो लेवल प्लेयर्स हैं, किसी भी फील्ड में एथलीट हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा फिजिकल वर्क लगता है, तो उनको थोड़ा सा कट शॉर्ट करना होगा. मैंने फ्रेंड्स के बारे में पहले भी बताया कि फ्रेंडशिप सर्कल से हटना या फिर सोशल मीडिया से पूरी तरीके से हटना शायद सॉल्यूशन नहीं है. आप उसको जितना कंट्रोल कर सकते करें. अब तो फोन में बेड टाइम मोड्स आ गए हैं, Yeah. बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप उस डिटॉक्स अपने आप को कर सकते हैं. तो उन चीजों का इस्तेमाल करें. क्योंकि वाई आई एम सेइंग कि जो एक्सटर्नल सर्किट है, जो भी आपके आसपास एम्बियंस है, उससे दूर इसीलिए नहीं हो रहे हैं बिकॉज this is just examination. You may fail into it, you may succeed into it, but then whom will you fall back to? It is the people around you. So do not cut yourself off of either social media, क्योंकि उस पे भी आपके फ्रेंड्स हैं, और कई बाकी चीजों से भी हटने की जरूरत है. थोड़ा कम कर सकते हैं, बट उसको चूली खत्म करना मेरा नहीं ख्याल की जरूरत है. ठीक है. So we have another question from Best of Archives only. What were your stress busters during the exam prep? I guess you have already answered, but still, if you want to add on something. Uh, Best of archives. I am fond of cricket, so I used to play a lot of cricket, watch a lot of matches, read a lot of article about cricket. So that was one thing. The other is that I had a huge bunch of friends. So I used to walk with them down the bank of River Gandak, which is beside my house in Hajipur. So these are two things that I used to do. Okay. So moving on to the another question: how to make a balance between personal time and study time? Yeah, that's a very good question. Because you have 24 hours a day. Now, by personal time, what do you mean? That does he, if he can specify, does he mean time for himself for watching? Say he wants to scroll social media, or he wants to, work on. I want to understand from you, like. So like for me is like personal time is like either watching movie or Mhm. scrolling Instagram. So in recreation, I believe recreational activities or whatever that suits your mood. So it is always, as I said, board examinations are not that arduous or दैट रिगरस कि उसमें 1-2 घंटे का समय नहीं निकाला जा सकता है. जैसे आप लाइक यू मेंटेनिंग योर हॉबी, आप उसी की तरह आप उसको भी मेंटेन कर सकते हैं. जो आपका पैशन है, या फिर आप जो मी टाइम जो आप कह रहे हैं, तो आप उसमें निकाल सकते हैं. मैंने Cool. Okay, I hope Sushant you got your answer. So moving on to the another question, what role your parents played in the journey during those board months? I think it is a pretty much good question. I absolutely. also wanted to ask this question. Yeah. So, I'm a night owl, so I study late nights. Now, without family, I think ये चीजें हो ही नहीं पाती, क्योंकि when you are studying at night,
सारी चीजें अलग हो जाती है, क्योंकि आपको रात के 2 बजे भूख लगती है, फिर आपको सुबह भी एक बार 5-6 बजे भी भूख लगती है जब आप सोने से पहले आप वो करते हैं। तो फॉर मी वो तो पूरे फैमिली का जो इकोसिस्टम था कि मेरे लिए फ्रिज में मैं अपनी बुआ के यहाँ रहता था, सो शी यूज टू पुट एक्स्ट्रा पराठास इन रेफ्रिजरेटर फॉर मी। तो सिमिलरली माय मदर एंड फादर, तो हर किसी का अपना कंट्रीब्यूशन है। एक तो इमोशनल सपोर्ट है जो कि हमको मिलता रहता है हमेशा ही। दूसरा ये है कि जो आपकी नीड्स है वो कैसे फुलफिल हो रही है। एंड बिकॉज वी वर प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम वी डिड नॉट रियलाइज कि ये चीजें हमारी जिंदगी को कितनी आसान बना रही है। When we moved out to different cities, we realized कि वो घर का खाना how important that is, right? तो Yeah. बहुत सारी चीजें थी, और मतलब if I start counting the blessings I have or the things that they have done to me, I think we will have to go into another session in detail, but they were very helpful. And whatever I am today, even this interview, all this is courtesy to my family and my friends. True. So yeah, moving on to the next question, how to get rid of the expectations. I think he is asking about the expectations of family or maybe friends and how to cater that. Yeah. So, if have a clear communication with your parents. Like, अगर आप 60% स्कोर कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स आपसे चाह रहे हैं कि 96% लाना है, तो हैव अ वेरी क्लियर डायलॉग कि ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट, यू टेल मी दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू डू, आई फॉलो दिस शेड्यूल, आई डू वट एवर it takes me to reach that point. But what I can do is, what is in my hand is my efforts. Now, I'll not be dishonest with my effort, but you will also need to understand that I may not be able to go that far. तो ये टू वे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द पेरेंट्स आर चेंजिंग, द kind of upbringing, the ambience of upbringing is changing. So people are more open to conversations now. Therefore, I think having a clear communication with people who are unnecessarily bullying you or putting you into a situation or having expectation from you, ये important है कि आप उनसे बात करें और उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करें कि क्या डिफरेंसेस। Cool. All right. So I have another question on the same pattern. I have always faced those high expectations from parents. How can one manage the same while studying? So I think you have already answered that. Communication is the key. Whether it's with your parents, whether it's with your friends, with your teacher, whoever. Like I think communication is the key. Um, do you want to add on something to this particular question, or maybe No, we I can? think communicate. Be very honest with them, because you are Yeah. spending rest of your lives with them. So they need to understand inside out who you are, what you can do, what are your abilities. So I don't think my parents never forced me. Again, I'd like to, like, I chose the subject that I had to choose. I chose the undergraduate subjects that I had to. And never in my life I faced any expectation, despite my father. I know my father wanted me to become something else, but he never. So my father parents were very understanding in this regard. But then try to communicate with people, because they're your own, वो आपके अपने ही हैं, तो आप बात करिए और मुझे लगता है कि True. चीजें ठीक। True, I agree. So moving on to the another question, I think Shushan wants to know how to manage board and competitive exams simultaneously. The preparation, like after board exams, there are like competitive exams also coming in. NEET हो गया, JEE session 2 हो गया. So how to manage these the sort of balance? All right, so there are two things, like if it is an examination of your own domain, तो जैसे कि नीट है आपका एग्जाम या जेई आपका एग्जाम है, तो फिर इन दोनों की जो प्रिपरेशन है दे ओवरलैप एट मेनी इंस्टेंसेस। सो कई जगह पे ओवरलैपिंग होती है और बाद में स्पेसिफिक टाइम आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड नजदीक है, तो 2-3 महीने से यू आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली, राइट? बट इन केस देर आर सम अदर एग्जामिनेशन, तो जनरली जो अदर एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आईपी मैट है या फिर सीयूईटी है, तो दीज एग्जामिनेशंस के सीयूईटी में आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सभी हो सकता है। तो इन एग्जामिनेशन के लिए जनरली बोर्ड एग्जाम के बाद का टाइम होता है, तो आप लाइट प्रेपरेशन विथ बोर्ड एग्जाम के पहले, मतलब अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनेशन दैट यू आर गिविंग। और उसके बाद आप गियर अप कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, जब आप फुल ऑन जा सकते हैं, क्योंकि जनरली देर इज अ गैप ऑफ अराउंड एटलीस्ट 4 to 5 वीक्स।
तो जेई और नीट छोड़ के कोई ऐसा सिलेबस नहीं होता कि वो टाइम का है। या प्लीज गो। Yeah. Moving on, I think like there are all the questions we have covered so far. They are the like repetitive questions. One unique question I'm seeing here is how is ambience of boards exam different from school home center based exam? So, school home center based exam. Can you please explain me this term? Because I think it is about giving I examination think from home. he's talking about the pre boards or maybe the exams we usually have. So could you please elaborate your question, sir? It would be What I'm great. able to decipher is that he's asking what is the difference between the examination that we give from home, the mock test. Maybe I don't know. I'm answering his question. If you could please write down your question again, so will that be okay? Okay. So he is asking about the exams here we used to give in like 6 to 9 class exams, and Mhm. how is the exam pattern different from board exam to this homeschool uh, Yeah. center based All right. exam? So the pattern is not very different because जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो अल्टीमेटली कमो बेस उसी के आसपास होते हैं जिससे बोर्ड एग्जाम्स आपका होना है क्लास 10th में और क्लास 12। तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी डिफरेंसेस आएंगी। बस ये होगा कि आपके आसपास जो होंगे इन्विजिलेटर्स वो एक्सटर्नल आ जाएंगे। द इंफ्रास्ट्रक्चर मोर और लेस विल बी सेम, द साइज ऑफ क्लासरूम्स विल बी सेम। जो सिटिंग प्लेसमेंट जो आपके यहाँ एग्जामिनेशन में फॉलो होता है, इफ योर स्कूल हैज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इट विल बी सेम। तो ऐसा कुछ डिफरेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, बस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। देयर विल बी अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, लाइक कभी कोई फ्लाइंग बाहर से आ जाता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। या फिर कोई न्यू या फिर कोई ऐसा इन्विजिलेटर है जो बहुत कोऑपरेटिव नहीं है तो साइन में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो छोटे मोटे डिस्टर्बेंस होते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट एम्बियंस होता है, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। Yeah, I hope you got your answer. That's all for today. As we wrap up today's session, I want to thank you, Ronak, for this insightful session. I hope you all got your answers to your questions. If you have any more questions related to exam stress or any career-related queries, then you need to ask, or then you need that you want to ask, then simply check out our webpage, and the link is in the comment section and it has pinned. There you will be like able to see ask me anything option where you can get answers directly from our expert counselors. So go ahead and explore. Don't forget to hit that subscribe button below to stay updated and never miss any of our weekly career classes like this one. And it was quite engaging also. Yeah. So thank you all for joining us today. We hope you found this session valuable. Have a fantastic day, and we look forward to seeing you next Saturday at 4 p.m. Good luck. Thank you, Ronak, and it was really amazing session. Thank you so much. It was great interacting with you. Thank you, iDreamCareer, for this opportunity. Thank you so much.